pleases a man with his will. Training yourself so as to maximize willpower, it is the crowning achievement of epic life. You can if you think you can. Your I can is more important than IQ. We are going to generate alchemy of physics in your brain. Today we are going to start the new concept, modes of vibrations of air column. Under this head, let's talk about the first mode of vibration of air column. See, this is a cylindrical tube closed at one end and open at other end, and the vibrating tuning fork is held near the open end of the pipe. Let me want to say that when vibrating tuning fork is held horizontally near the open end of the pipe, longitudinal wave enters inside the pipe. It gets reflected at the close end of the pipe, and hence the incident wave and reflected wave interfere with each other, forms a stationary wave inside the pipe. What I want to say that when compression enters inside the air column, it gets reflected as a compression at the closed end of the pipe, and the reflected compression when it reaches the open end of the pipe gets reflected as a rarefaction. Means here, what is the first mode of vibration of the air column? Vibrating tuning fork is held near the open end of the pipe in a such way that one antinode and one node should be formed. One node and one antinode should be formed. Node should be formed at close end, antinode should be formed at the open end of the pipe. In the first mode of vibration, one node and one antinode are formed. Let L be the length of the vibrating air column. L be the length of the air column. Then the total length of vibrating air column, that is the distance between node and antinode, that is lambda by 4. As we know that, we have learned in previous period, the distance between one node and one antinode is lambda by 4. L is the length of vibrating air column. Then lambda is equal to, I can write 4 into capital L. This is the corresponding wavelength of vibrating air column. What we have done here, vibrating tuning fork is held near the open end of the pipe in a such way that one node and one antinode should be formed. Let L be the length of the vibrating air column. L is equal to lambda by 4. Then lambda is equal to 4L. This is the corresponding wavelength of vibrating air column. Lambda is equal to 4L. यहाँ मैंने वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को हॉरिजॉन्टली हेल्ड किया है, तो हमें इस पाइप के अंदर वन नोड और वन एंटीनोड फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं. इस वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की लेंथ हमने कैपिटल एल अज्यूम की है, तो कैपिटल एल इज इक्वल टू यहाँ मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड लैम्बडा बाय 4. लैम्बडा इज इक्वल टू 4L. यह है वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की वेवलेंथ. दिस इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम. लैम्बडा इज इक्वल टू 4L. In the first mode of vibration of air column, what I have done here, vibrating tuning fork is held near the open end of the pipe in a such way that one node and one antinode should be formed. Let capital L be the length of the vibrating air column. L is equal to, then the distance between node and antinode is obviously lambda by 4. The lambda is equal to 4L. This is the corresponding wavelength of the vibrating air column.
But as we know that the relation between velocity, frequency and wavelength V is equal to n lambda, then n is equal to, I have right to write V upon lambda, then n is equal to, I may write V upon 4L. This is what the expression we have got. This is the fundamental frequency with which air column gets vibrated. This is the lowest frequency of vibrating air column. This is the fundamental frequency of vibrating air column. N is equal to V upon 4L. इस कॉन्सेप्ट में हमें एक ट्यूब लेनी है जिस ट्यूब का वन एंड क्लोज है और जिस ट्यूब का अदर एंड ओपन है. इस ओपन एंड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क पकड़ना है. जब हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क पकड़ते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अंदर एंटर करती है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड वेव में कन्वर्ट होता है. इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों इंटरफियर होके अंदर ट्यूब के अंदर एक स्टेशनरी वेव बन जाती है. मीन्स लेट मी वांट टू से दैट जब कंप्रेशन यहाँ एंटर हो जाएगा वो कंप्रेशन यहाँ क्लोज रेंज के यहाँ रिफ्लेक्ट होके कंप्रेशन में कन्वर्ट हो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन जब ओपन एंड के यहाँ पहुंचेगा तो उसका वो रेयरफैक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. अभी हमें जो फर्स्ट मोड के बारे में सोच रहे हैं कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरह से हेल्ड करना है जैसे कि वन नोड और वन एंटी नोड बनने चाहिए. वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की लेंथ हमने कैपिटल एन कंसीडर की है. कैपिटल एन इज इक्वल टू, हमें मालूम है नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4 होता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4L. ये वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की वेवलेंथ है, लैम्बडा इज इक्वल टू 4L. और हमें मालूम है, हमें पता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है. V इज इक्वल टू n लैम्बडा. n एज इट इज रखा, V अपॉन लैम्बडा के जगह 4L. इसे कहते हैं हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम. इसे कहते हैं लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम. Mode means what? The way in which air column gets vibrated. That is called as mode. And this is the first mode we are discussing. First mode of vibration of air column. And this is the fundamental frequency of vibrating air column is what? V upon 4L. Now, we are going to talk about the second mode of vibration of the air column. Let's talk about second mode of vibration of air column.